What's good everyone? Hi, my name is Trishaa and welcome to another makeup tutorial. So winter जा चुका है and summer आ चुका है and हर एक बदलते सीजन के साथ हमारे तीन मेन कंसर्न होते हैं, स्किन केयर, मेकअप एंड आउटफिट. बट फॉर टुडेज वीडियो स्किन केयर और आउटफिट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन मेकअप. और समर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है स्वेटिंग का. सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग to share a makeup tutorial which is a sweat proof, no foundation and long lasting as well. This is a chic minimalist makeup look. So without wasting any further moment into the intro, let's directly jump to the video. Before we begin this video, I'll just put this hairband to my head, okay, on that, so that जो हमारे बाल है वो हमको डिस्टर्ब ना करे. Okay, let's just start. Okay, so please pardon me if you heard any kind of construction noise because अब वो आदत हो चुकी है, मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ वो उनको उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा आवाज वाला काम करना होता है. बट एनीवे, सो मच गोज ऑन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ आईज हियर इन दिस बाउल. नाउ यू विल आस्क मी कि आईज का मेकअप में क्या काम है. तो स्वेट प्रूफ मेकअप के लिए आईज इज द बेस्ट थिंग. टेक अ क्यूब ऑफ आईज एंड rub it on your face until ये आइज पूरा खत्म ना हो जाए, बिकॉज ये आपकी फेस की स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइट करता है. एंड इफ यू आर समवन कि जिसको पोज की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज पोज ना, तो आपको एक नेचुरली प्राइमर का इफेक्ट भी देगा. इट इज अ वेरी कूल थेरेपी. अगर आपने इसको यूज नहीं किया है टिल देन प्लीज यूज दिस एंड यू विल डेफिनेटली थैंक मी लेटर. जो भी छोटी छोटी डर्ट है उसको भी निकाल देगा एंड स्किन को बहुत अच्छे से टाइट. ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैक अगर आपको अपना मेकअप स्वेट प्रूफ करना है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी करना है. बट मेक श्योर आप अपनी जो वैनिटी है वो गंदी ना करें, वरना आपको मम्मा की डांट भी खानी पड़ सकती है. सो मेक श्योर आप जब भी आईज रब करें तो एक छोटा सा टॉवल या फिर नेपकिन अपने पास रखें. ओके, सो वी आर डन एंड माय फेस feels so healthy and so glowy, so it's just perfect. Now it's time to use moisturizer and I'm using this Face Shop Rice Ceramide Moisturizing Emulsion Hydration ऐसा कुछ है. Now this is a moisturizer only. मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि मॉइस्चराइजर ऐसा कैसे हो सकता है. हो सकता है बिकॉज इट्स अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड ये जो बॉडी मिल्क होता है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर नहीं है. दिस इज स्पेशली फॉर द ह्यूमिड एंड द समर सीजन. दिस इज अ वेरी लाइट वेट एंड वाटरी बेस्ड मॉइस्चराइजर. आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है. Alright, so the next step is applying a sunscreen and वो मैं यहाँ लाना भूल चुकी हूँ and that is right in front of me on my vanity. So give me a minute, I'll just take that. Okay, so I get my sunscreen. It's from Lakme Sun Expert and this is one of my favorite sunscreen. I'm experiment with a couple of new sunscreen but उसको use करते हुए मुझे शायद 5 या 7 days हुए, so I'm not really about to give a good review. Let me use it for a while and then I will surely review it. Okay, so whenever you are using sunscreen, make sure कि आप उसे moisturizer की जैसे ट्रीट ना करो. Use 2 finger rule to apply your sunscreen, just like this. 2 finger, 2 finger, 2 finger and 2 finger. And now dab it. आप जब भी घर से बाहर जाने वाले हो उससे 30 या 45 मिनट्स पहले से आपको सनस्क्रीन यूज करना है. Alright, so we are done with our pre-makeup skincare. I'm feeling really very good. For the makeup, I am teaching foundation. But if you are someone के जिसको foundation नहीं लगाना, but थोड़ा सा coverage चाहिए, in that case you can go to choose with BB cream or CC cream. But मैं सबको teach कर रही हूँ and I'm using this K Beauty concealer. If you don't want to spend this much amount on concealer, then you can also choose to go with Fit Me concealer as well as Swiss Beauty concealer because वो दोनों concealer भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं. I'm just putting a little bit around my eyes, around my nose and थोड़ा सा यहाँ पे. जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं
तो आपको वो नेचुरल फिनिश देगा। मुझे ऐसा नेचुरल फिनिश वाले लुक बहुत ज्यादा पसंद है। टेक योर टाइम टू ब्लेंड योर कंसीलर। Done with the concealer and it's time to set our face, but before that you can clearly see some of my scar and imperfection on my face because मुझे ऐसा natural look वाला जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है and I love being myself. To set the concealer I am using this Nykaa compact and ये नया है but it's broken. मेरी वैनिटी से ये गिर चुका था and इसके बाद इसके हालत देखने वाले नहीं है. So I'm just tapping a beauty blender and set my face. I'm more of a fit me baby. मुझे fit me का कॉम्पैक्ट यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है but unfortunately वो अभी नीचे पड़ा है and मैं बहुत आलसी हूँ. So I'm just using whatever I have here in my room. I'm using all over my face because हमने सब कुछ डिच कर दिया है. We just use concealer, so you know थोड़ा presentable दिखना भी जरूरी है. मेकअप को डिच करो लेकिन इतना भी नहीं कि आप presentable ना दिखो. We are done with our base, but to add a little bit flush of color to our face, I'm using this tint from Face Shop. And I know winter खत्म हो चुके हैं, but I am so obsessed with tints because tint ना वो powder blush में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है blend करने में and वो आपको एक natural look देता है. So पता नहीं I'm not able to stop using tint maybe later in the summer especially, but for now let's use tint. उसी मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है. Now whatever I have on my finger I will just rub it over my eyelid. बहुत ज्यादा तो नहीं है but you know just to give a little bit of definition of course. I hope I'm not looking like a clown because मैंने tint थोड़ा सा ज़्यादा use कर लिया and yeah, it's okay. We can work with this. Now let's set our brows. मैं पहले brows बिल्कुल set नहीं करती थी because I'm blessed with a naturally brow, but जब से मैंने start किया I feel that setting your brow आपको ना एक बहुत ही ज़्यादा confidence provide करता है. Also आपके पूरे face को एक बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में अपलिफ्ट करता है. So if you are not setting your brows, please start. You will definitely thank me later. And I'm using this Nykaa Brow on Point Micro Fine Pencil. Link will be in the description box. I really hate this person because जब भी मैं कुछ बोलती हूँ उसको अपना स्टार्ट ही करना होता है. Anyways, let's get back to the point. I'm using this neon blue liquid eyeliner and this is I got from West Side. बहुत ही प्यारा सा कलर है. I just love this color. It is so pretty color. एक काम करती हूँ eyeliner लगाती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ because लाइनर लगाते वक्त बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. Please note that. Alright, so we are done with our eyeliner. मुझे wing liner करना था to be honest, but मैं इस लाइनर को इतना ज़्यादा यूज कर चुकी हूँ कि it's really empty. मुझे literally नहीं पता मैंने ये eyeliner इस वक्त इससे कैसे लगाई है. But anyways, let's move towards the next step, which is मस्करा. आई नो मेरे लिए थोड़ा वियर्ड है साउंड करना. रिसेंटली मैंने मस्करा लगाना स्टार्ट किया है. लाइक मैं पहले लगाती थी बट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विथ, बट पता नहीं क्यों आजकल मुझे मस्करा लगाना बहुत अच्छा लगने लगा है. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई अप्लाई राइट नाउ एज वेल बिकॉज डेफिनेटली मस्करा से फर्क तो पड़ता है बट ये लगाते वक्त भी बात नहीं करते बिकॉज फिर आप अपना पूरा मेकअप बिगाड़ सकते हो. प्लीज इग्नोर माई वियर्ड फेसेस व्हाइल अप्लाइंग मस्करा बिकॉज हर लड़की की यही कहानी. सो प्लीज डोंट लाफ एंड जस्ट इग्नोर. मुझे लॉरियल का जो लेस वॉल्यूमिनस मस्करा है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है. बट फॉर नाउ आई हैव यूज्ड दिस लैश सेंसेशनल फ्रॉम मेबलिन एंड उसने मेरे लैशेस को बहुत अच्छे से ओपन अप कर दिया. बहुत ही प्यारा सा
curve भी दिया है, so yeah, I'm very much liking it. And it's time for the lipstick, the final step. So I'm using this Masaba by Nykaa, and it's in the shade Buzzkill, one of the beautiful pink shade. I am not a very pink baby, but you know, I am obsessed with this color. It's a very cool tone, nude kind of a pink, और आपके lips के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से complement करता है. So it's actually become my go-to lipstick, and I just love it. So this is the final look. Let me know ये makeup look आपको कैसा लगा. If you enjoyed this video, then do not forget to do all the good things like comment, share and subscribe. With this, I'm signing off. We'll meet you in my next video. Till then,